स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 कंप्यूटर, चैप्टर है इंटरनेट। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग, इज सोशल नेटवर्किंग सेफ? आंसर: social networking is the use of internet based social media sites to make connections with friends, family, classmates, customers and clients. Social networking can occur for social purposes, business purposes, or both through sites such as Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, etc. Advantages of social networking. Social networking sites are free and easy to use or access. Social networking sites allow users to share ideas, digital photos and videos, posts, and to inform others about online or real-world activities and events. A 2015 study shows that 85% of people aged 18 to 34 use social networking sites for their purchase decision making. Educators are using social networking to stay connected with their students. It brings closer to loved ones who are far away. It helps to expand our circle of friends and business contacts. Is social networking safe? Social media platforms have now become an integral part of our lives. With the help of social networking, we stay connected with others, but we should take care about how much personal information we should post on these networking sites. Social media platforms allow attackers to find personal information that can be used to target specific individuals. Whether social networking is helpful to companies? Companies have found that social networking sites such as Facebook and Twitter are great ways to build their brand image. For example, if a customer complains about a product or service on Twitter, the company may address the issue immediately, apologize and take action to make the matter right. However, criticism of a brand can spread very quickly on social media, which can create a big problem for a company's public relations. Disadvantages of social networking. Weakens ties with relatives due to excessive spending of time on social networking. Decreases face-to-face communication skills. Facilitates laziness. Bullying and negative comments called trolling that occur over social networking can lead to anxiety, depression-like symptoms and high level of stress. We often hear and see celebrities face trolls and backlash on social media, forcing them to quit. The person whom you are talking may be fake. Hackers can hack your profiles, which can be risky. इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग का मीनिंग है इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया साइट्स को यूज करना, जिससे कि हम फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, क्लासमेट्स, कस्टमर्स या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के साथ कनेक्शन बना सकें। सोशल नेटवर्किंग का पर्पस सोशल या बिजनेस या दोनों हो सकता है। सोशल नेटवर्किंग के लिए हम कई साइट्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा को यूज करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर यूजर अपने आइडियाज, डिजिटल फोटोज, वीडियोस और कई तरह की इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज एंड करंट अफेयर्स के बारे में भी ऑनलाइन पोस्ट डाल सकते हैं। 2015 की एक स्टडी के अनुसार 18 से 34 साल की एज ग्रुप के 85% लोग किसी भी चीज की परचेजिंग का डिसीजन करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज करते हैं। एजुकेटर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड रहने के लिए सोशल नेटवर्किंग को यूज करते हैं। दुनिया भर की कंपनीज को मालूम हो गया है कि सोशल नेटवर्किंग
साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर उनका ब्रांड इमेज बनाने में बहुत हेल्प कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर ट्विटर पर एक प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कंप्लेंट करता है तो कंपनी उस इशू को इमीडिएटली रिजॉल्व कर सकती है। लेकिन कई बार एक ब्रांड का क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फैल सकता है, जो कि कंपनी के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि सोशल नेटवर्किंग सेफ है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हम दूसरों से कनेक्टेड रहते हैं, पर हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इन साइट्स पर कितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पोस्ट करनी है, क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया पर डाली गई पर्सनल इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को टारगेट कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग की कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। कई लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे रिलेटिव्स के साथ रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग के कारण फेस टू फेस कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी आ रही है। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोगों को बुलिंग या ट्रोलिंग को फेस करना पड़ता है, जिससे कई लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन या ज्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार हमने सुना या देखा है कि कई सेलिब्रिटीज को ट्रोलिंग फेस करनी पड़ती है और वे सोशल मीडिया साइट को क्विट कर देते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वीडियो पोस्ट करने के चक्कर में कई बार लोग ऊंची पहाड़ी, ऊंची बिल्डिंग एक्सेट्रा से नीचे भी गिर जाते हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर डाली गई वीडियोस को ज्यादा लाइक्स या व्यूज न मिलने के कारण स्वयं डिप्रेशन में चले जाते हैं। हैकर्स हमारा प्रोफाइल